Hello, all my dear friends, viewers. I hope you will be fine and happy. Friends, today we will discuss relationship between language and culture. ओके आज हम लैंग्वेज एंड कल्चर रिलेशनशिप के बारे में लेक्चर बनाएंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर क्या है. ओके, लैंग्वेज एंड कल्चर आर क्लोजली related to each other. Okay, language by which a man can express his inner feeling, thoughts, and imagination. On the other hand, if we look at what we are, what we say, what we observe, okay, and what we do in our culture, language and culture are initially related to each other, and even they are influenced by each other also. Okay, language is influenced by culture. Again, language is the product of culture. Okay, in fact we do not think language without culture. So आज जो रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें फर्स्ट है कि लैंग्वेज एंड कल्चर ये आपस में क्या है कि ये क्लोजली रिलेटेड है, ये इंडिपेंडेंट है विद ईच अदर. ओके, यानी लैंग्वेज हमारे पास क्या चीज़ होती है कि लैंग्वेज के ज़रिए हम अपने फीलिंग्स, थॉट, इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करते हैं. इस तरह अगर हम सोसाइटी में जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, वो किस चीज़ में आ जाती है, वो सब हमारी लैंग्वेज एंड कल्चर में आ जाते हैं. ओके, लैंग्वेज एंड कल्चर आर इनिशियली रिलेटेड टू ईच अदर. ये हमारे पास क्या है, बुनियादी तौर पर एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस होती है, एक दूसरे पर इंटर रिलेटेड है. ओके, language is influenced by culture and culture is the product of and language is the product of culture. Okay, language is the part of culture, we can say, and we do not think without language and or culture. Okay, हम कल्चर में लैंग्वेज के बगैर सोच भी नहीं सकते. ओके, and the second paragraph, language can be used for to maintain the culture and also convey the culture, and culture ties the specific language represents an a particular social group of a culture. ओके, एक मखसूस लैंग्वेज होती है, हर कल्चर की अपना लैंग्वेज होती है, अपना वो कल्चर भी होते हैं हर सोसाइटी का. ओके, however every society has its own culture, okay, and language that people use in his और हर सोसाइटी का अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज होते हैं, और हर सोसाइटी का कल्चर और लैंग्वेज दूसरे सोसाइटी से डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं. ओके, द पीपल ऑफ द सोसाइटी इज not only learn the words, sentence, grammar and linguistic in a society, but they learn to which people can learn or but they learn behavior, norm, values and custom of society. ये हम अपनी सोसाइटी में ओनली लैंग्वेज को हम नहीं सीख सकते. ओके, ना हम अपनी सेंटेंसेस सीखते हैं, ना ग्रामर वगैरह, बल्कि हम सोसाइटी में हमारे पास जो वैल्यूज़ है, जो नॉर्म्स है, जो कस्टम है, वो भी हम सीखते हैं. ओके, लैंग्वेज इज़ द की ऑफ कल्चर आइडेंटिटी बाई विच पीपल कैन लर्न और स्टडी द कल्चर ऑफ सोसाइटी. लैंग्वेज के ज़रिए हम अपनी सोसाइटी के कल्चर और सोसाइटी को लर्न कर सकते हैं. ओके, देयर आर सम बिलीफ और थॉट्स, आइडियाज विच आर एग्जिस्ट इन और कल्चर ऑफ अ सोसाइटी एंड the other culture. These things may be absent in a society. शायद जो चीज़ें हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में होती है, वो दूसरी कल्चर में शायद वो एब्सेंस हो. ओके, फॉर इंस्टेंस द वर्ड अंट इज़ यूज इन पश्तो सोसाइटी फॉर पॉपो एंड हाला. यानी जिस तरह हम अपनी सोसाइटी में अगर हम देखें, इन पश्तून सोसाइटी में we use the word aunt for both like poppy and hala. hala और poppy के लिए, poopy के लिए हम क्या करते हैं, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं. आंट का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों के लिए. ओके, हम दोनों के लिए एक ही माने इससे हंस करते हैं. एंड अमेरिकन दिस वर्ड नॉट यूज टू एवरी वन. इफ यू लुक एन अमेरिकन सोसाइटी, सो हेयर एंड वेयर द पीपल नॉट यूज फॉर बोथ, they use for only for one. And the same example, if we look into the ancient Roma
अगर हम एंशेंट रोमन की जो सोसाइटी है उनकी जो इस दौर की हम बात करें तो इसमें क्या हो जाती है, इट इज़ नोटिस दैट द रोमन हैड नो वर्ड फॉर रेडियो. It means that and that very time there is no word for radio, okay, because radio, television and calculator or computer, in fact this time were not exist the culture. इस वक्त जो उस दौर का जो हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त रोमन में टेलीविज़न, कैलकुलेटर, रेडियो इसका कोई ज़िक्र भी नहीं था और इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. दैट्स वाई इसके लिए भी एक मखसूस वर्ड्स भी नहीं थे. ओके, so in fact this time word not exist in culture, so this time there are no word exist in his culture. okay, so इसके बारे में हम मज़ीद भी पढ़ेंगे. यहाँ पर एक तीसरे पैराग्राफ में है, सिमिलरली इफ़ वी लुक इनटू द मॉडर्न वर्ल्ड. ये तो अभी हमने जो रोमन की बात हुई अभी हम मॉडर्न एरा की बात कर रहे हैं कि मॉडर्न एरा में वो कौन सी वर्ड है, वो कौन सी कॉन्सेप्ट है जो हमारी कल्चर हमारी सोसाइटी में मौजूद है. ओके, इफ़ वी लुक इनटू द मॉडर्न वर्ल्ड we find the new word in English language such as internet, download. Okay, but these words were not exist before the invention of internet. Internet invention से पहले ये words हमारे पास ना words थे और ना इनकी का कोई concept था. जब internet invention हुए तो words भी आ गए, concept भी आ गए और words भी आ गए. okay, after that the invention of internet these words are added to the English language. So it has seen when a matter on item come to the culture a new word to add the language. So when a culture is enriched because of the arrival of a new item. okay, so and the fourth paragraph, similarly there are some belief which are considered good in one society and the same thing not considered good to other society. ये पैराग्राफ जो सिंपल वर्ड्स में हमने लेके ये बहुत इजी है, हम आपको जस्ट रीड करते हैं फिर आपको लास्ट में बताते हैं कि इसका मतलब क्या है. अ पर्सन कैन बी अडॉप्ट मोर देन वन कल्चर एट द सेम टाइम and also used to two language at the same time. For example, if a person speaks Pashto language and after some years they start the English language and this adopt the culture of this second language, culture can be die with the passage of time and can be innate suddenly if a society cannot take interest or use his or her culture in society. okay, इसका मतलब ये है कि there are no belief which are considered good. There are some beliefs. okay, कुछ बिलीव्स है, कुछ कंसेप्ट है जो हमारी सोसाइटी में वो गुड कंसिडर करते हैं और शायद वो कंसेप्ट वो बिलीव दूसरी सोसाइटी में वो बैड कंसिडर करती है. ओके, अ पर्सन कैन बी अडॉप्ट मोर देन वन कल्चर एट द सेम टाइम. इसका मतलब यह है कि एक शख्स एट द सेम टाइम मोर देन वन कल्चर एंड मोर देन टू लैंग्वेजेस वो बोल भी सकते हैं और टू कल्चर वो अडॉप्ट भी कर सकते हैं. ओके, जिस तरह हम पश्तो बोलते हैं जो हम उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी. इस तरह अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान में हम जो हमारा अपना जो कल्चर है वो भी हमारा है, अगर हम दूसरी फॉरेन कंट्री में जाए वहाँ पर उन लोगों का जो कल्चर वो अडॉप्ट करें. ओके, सो एट द सेम टाइम वी कैन अडॉप्ट मोर देन टू culture or language. okay, so now we will discuss so the culture will be die. okay, and this paragraph with the passage of time on the other hand if the society and maintain their culture then the culture will be alive and maintained in a society. इसका मतलब ये है अगर हम अपनी लैंग्वेज जो हमारा अपना लैंग्वेज होता है जो आपका नेटिव लैंग्वेज होता है आपका जो मदर टंग होते हैं आप अपने जो सोसाइटी में यूज़ करते हैं तो समझ लो कि आपका लैंग्वेज क्या है वो अलाइव है, ज़िंदा है. अगर आपने अपने लैंग्वेज को वो छोड़ दिया और दूसरी लैंग्वेज को स्पीकिंग या उनको अडॉप्ट किया ओके
तो विद द पैसेज ऑफ टाइम योर मदर लैंग्वेज विल बी डाई। ओके, इसी तरह अगर हम देखें कि वो कल्चर कि जो चीज़ें हमारे जो बिलीव है, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, ओके, जो ट्रेडिशन होते हैं, अगर हम वो उनको इस्तेमाल करते हैं अपने कल्चर में, अपनी सोसाइटी में, ओके, तो इट विल बी मेंटेन। इफ़ यू not use in our daily life so it will be die with the passage of time। जो चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करते उनको with the passage of time वो ख़त्म भी हो जाते हैं, because you are not used in our daily life। okay। Similarly, language and culture are interrelated to each other। they cannot separate with each other and dependent to one another in a society में ये एक लैंग्वेज एंड कल्चर एक दूसरे पर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये विदाउट लैंग्वेज एंड कल्चर ये एक दूसरे पर इंटर रिलेटेड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ओके, कल्चर टेल अस दैट हाउ यू टॉक और मीट समवन इन अ सोसाइटी। कल्चर हमें क्या बताते हैं, ये कि आप अपनी सोसाइटी में किस तरह बात करते हैं, आपका मैनर क्या है, आपका जो ड्रेस है वो क्या है। फॉर इंस्टेंस व्हेन वी टॉक टू आवर टीचर वी स्पीक अ polite and formal language, and if we talk to their friends we do not use such type of formal words। so all these formality and informality tell us our culture, that how you talk to elder or young baby। we acquire culture knowledge in our society with interaction or communication with each other। we acquire knowledge by conscious and unconsciously। okay, it's very easy for you people inshallah। इसका मतलब ये है कि हम जो अपनी सोसाइटी में जो हम बड़ों के साथ बातें कर रहे हैं या हम अपने फ्रेंड्स के साथ जो बातें कर रहे हैं, तो जो हम टीचर्स या एल्डर से बात करते हैं तो उनके साथ हम अपने फॉर्मल वे से बात कर रहे हैं, पोलाइट अंदाज से बात कर रहे हैं। अब अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कोलीग्स के साथ जो बातें कर रहे हैं तो ये इनफॉर्मल वे में हम इस्तेमाल करते हैं, हम मोस्टली ऑब्ससीन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ओके, ये हमें कौन बताते हैं ये चीज़ें, ये हमारे कल्चर हमें बताता है कि आपने बड़ों की किस तरह इज़्ज़त करना है, ये कल्चर से हम सीखते हैं ये सब कुछ। ठीक है, एंड द लास्ट वन, कल्चर डिफाइन और लैंग्वेज एंड लैंग्वेज शेप्स आवर कल्चर। लैंग्वेज इज़ अ सिंबल ऑफ कल्चर एंड पर्सनली आइडेंटिटी। Language is the medium through which individually transmit culture from one generation to another generation, okay, to generation we can say। every culture group have different world view based on their own culture shared knowledge। language can be expressed or cultural reality, such as when we express fixed ideas or events that are communicable, and if we use words that are reflect our attitude, belief and point of view। some linguists say that language and culture are interactively related। okay, language and culture have the dialectical relationship between them। every language is a part of a culture and it serves and reflect culture need। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत आसान है, हमने इजी लैंग्वेज में लेके है, आसान लफ्ज़ों में हमने उनको बयान भी किया, और ये बहुत इजी वर्ड और इजी सलीस उर्दू में हमने सलीस लैंग्वेज में हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद रखता हूँ को अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इंशाल्लाह हम मज़ीद इस पर वीडियो बनाएंगे, लेक्चर देखेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इसमें कोई मुश्किल हो, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर विद देयर फ्रेंड्स। ओके, ये आपस में क्या करें, वो कमेंट्स दे जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई। ओके, थैंक यू, बाय।